Assalamu alaikum grade 10. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are safe. I hope all of you are healthy. And I hope that all of you are studying. I hope all of you are giving your due attention towards your academics. Faiza Nadeem here, and let's start today's lesson. What do I teach? English. Let's start today's lesson. What is the board saying? The board is saying that we are going to do the comprehension passage that is present in review 2. आपकी review 2 exercise जो है उसके हमने अपने पिछले lectures में किया था question answers, MCQs और grammar. ठीक है, हमने वो सब कुछ अपने पिछले lectures में किया है. हमने applications भी लिखी हैं creative writing में. आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम वो कॉम्प्रीहेंशन करने जा रहे हैं जो कि रिव्यू 2 एक्सरसाइज में गिवन है. आपको पता है आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आता है जिसको कि आपने आंसर करना होता है. यूजुअली वो बहुत आसान कॉम्प्रीहेंशन होता है, लेकिन उस कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो अनसीन होता है हमें प्रैक्टिस जरूर करनी है. यहाँ पर हैं उसके 4 क्वेश्चंस. Let's move on to the rest of the questions. Let's see how many questions this comprehension is carrying, and then I will read the comprehension for you and we will solve these questions out. ठीक है, पूरे comprehension questions पहले देख लें कि कितने हैं. ठीक है, alright, यहाँ पर है 5 सवाल. छठा सवाल है पैराग्राफ का या पैसेज का प्रीसीड राइटिंग. वो मैं आपको बाद में लिख के सुनाऊंगी. पहले मैं आपको पैराग्राफ रीड करती हूँ जो आपकी स्क्रीन पे साइड बाय साइड पॉप हो जाएगा. I refer to the letter Monsoon and Disaster Management July 15. I suggest the following precautionary measures to be adopted before the onset of monsoon. Disaster management teams must visit all villages to educate the population living in rural areas for compliance of standing operation procedures SOPs to avert any human and livestock loss in the case of floods. Disaster management must ensure the affected people's belongings left behind when they abandon their houses must be protected from any theft, etc., as was experienced in the floods of 2010 and 2011 respectively. ठीक है, so we are speaking about the disaster management during the times of monsoon or floods. Adequate arrangements of evacuation of people and livestock must be ensured. Sufficient numbers of boats must also be made available on short notice either by federal or provincial governments. Sufficient numbers of water pumps must be made available to drain out water in populated areas. Provincial irrigation departments must be made responsible to ensure strengthening of dikes, embankments. Disaster management authorities must ensure the availability of tents on short notice so that the affected people can be provided shelter without waiting in the open. Security arrangements must be put in place to ensure that food supplies to the affected people can be ensured, as incidents of looting or looting took place in the past. No political point scoring be allowed by law enforcement agencies, and there must be one distributing body for food and other essential items. Civic bodies must ask sanitation departments to clean all mullahs in populated areas so that a smooth flow of rainy water can be ensured. Medical teams must also report to the affected areas with adequate supplies of medicine on short notice. This was the comprehension passage present in your book. Let's quickly do the question answers. Let's do the question number 1 first. What does question number 1 says? Question number 1 says, what is the main idea of the letter? And you know what the main idea of the letter is. The main idea is monsoon and disaster management. Question number 2 says, what is the writer's opinion on the issue?
The writer's opinion is that we should have a proper planning and strategies in order to avoid loss of people, property. We must develop an effective infrastructure to educate the villagers. Question number 3. What point does the writer make to support his opinion? The writer has given different opinions. He has said that the villagers and their populations should be educated, made ready to follow made ready in order to comply of standby operational procedures. Compliance का मतलब होता है obey करना और उनको follow करना. Usually क्या होता है कि जो हमारे villagers हैं वो बहुत adamant होते हैं. Adamant क्या होता है? जिद्दी होते हैं. वो नहीं मानते differences को या वो नहीं मानते steps जो उनको लेने चाहिए. तो villagers को इस सेंस में ट्रेन कर देना चाहिए कि अगर हम आपको कोई बात कह रहे हैं तो आपने हमारी बात सुननी है, जिद नहीं लगानी. ठीक है. What suggestions does the writer give to cope up with this issue? The writer has given multiple suggestions. He says that village population must be educated to comply with the strategies that are set by the government. The village population must follow whatever the government has asked them to do. Affected people's belongings should be saved. इन्होंने इधर एग्जाम्पल दी है कि 2010 और 2011 के जो फ्लड्स थे उसमें जो इफेक्टेज थी उनकी बिलोंगिंग्स लूट ली गई थी, चोरी कर ली गई थी. तो दे शुड बी सेव्ड सो दैट द विलेजेस आर रेडी टू इवैक्यूएट देयर होम्स. उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथन ऑफ एम्बैंकमेंट, आपके जो रिवर्स हैं, जो आपकी कैनाल्स हैं, उनकी एम्बैंकमेंट कर दें, उनका जो बॉर्डर्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर दें. ठीक है. सिक्योरिटी ऑफ फूड आइटम्स, एम्पल खाना प्रेजेंट हो, अच्छा खासा खाना प्रेजेंट हो ताकि लोग खाना खा सके, उनको खाना प्रोवाइडेड हो, वो परेशान ना हो. वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आफ्टर ऑक्सीजन इज डेफिनेटली फूड एंड फ्रेश वाटर. तो दे शुड बी प्रेजेंट, दे शुड बी स्टोर्ड in order to avoid any mishap during any of these situations. अब वो कह रही no political scoring, no political point scoring. क्या होता है कि जब फ्लड्स आ जाते हैं, जब तूफान आ जाता है और उसके बाद ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे एड देने, हेल्प करने जाती हैं और वहाँ पर अपनी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देती हैं. Situation management, the situation should be managed properly by the proper reinforcement companies and the provision of medical teams. Medicine properly provide होनी चाहिए, food proper provision होनी चाहिए और water की proper provision होनी चाहिए. This is what the writer said in his specific comprehension, in his specific writing. Question number 5 is, do you agree with the writer and give reasons? Of course we are going to agree with the writer. The writer has been right through and through in his comprehension passage, right? He says that floods and other hazards has destroyed our social, political, strategic condition on a large scale. हम सिर्फ शर्मिंदा अपनी कंट्री वाइड नहीं होते, हम ग्लोबली शर्मिंदा होते हैं. जब पूरी दुनिया हमको एड देने आती है और जब ये कहती है कि आपको पता था कि फ्लड आना है तो आपने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स या कोई प्रिवेंटिव स्केल्स क्यों नहीं लिए. तो वी शुड हैव been very careful during the monsoon season, before the start of the monsoon season. Strategies अपनाएं. गवर्नमेंट प्रोविंशियल और फेडरल दोनों गवर्नमेंट्स को प्रॉपर इश्यूज लेने चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. ठीक है. मेजर्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसहैप्स, मेजर्स शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड आफ्टर द मॉनसून or during the monsoon season, right? The next question of your comprehension is write a précis of the passage. In the précis of the passage आपने क्या करना है? précis क्या करना है? समराइज करके लिखने हैं आपने, उसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं. तो उसमें आपके कौन से पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए? उसमें आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए. यू शुड स्पीक अबाउट द specific strategies taken in order to avoid mishaps, in order to avoid a loss of human lives, प्रॉपर्टी, योर एनिमल लाइफ. ठीक है. आपका जो वाइल्ड स्टॉक है, ठीक है, उस सब का आपने प्रॉपर स्टेप्स लेने ताकि वो प्रॉपर सेविंग रहे. ठीक है. और उसके बाद यू मस्ट एजुकेट द विलेजर्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई टू वॉट एवर द गवर्नमेंट इज सेइंग.
उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए. एवरीथिंग कम्स डाउन टू लिटरेसी. अगर आपका लिटरेसी रेट हाई है तो हर चीज़ आसान है, अगर आपका लिटरेसी रेट हाई नहीं है तो हर चीज़ मुश्किल है. नेक्स्ट इज प्रोविजन और अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी चाहिए. फूड, मेडिकल, शेल्टर वेयर दे कैन लिव, फ्रेश वाटर, हर चीज़ का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, हर चीज़ का आपके पास प्लान बी होना चाहिए, हर चीज़ आपके पास सेव्ड होनी चाहिए, ताकि जो डिजास्टर अगर आ जाए, इफ यू कम अक्रॉस एनी डिजास्टर, तो यू नो हाउ टू हैंडल द डिजास्टरस कंडीशन, राइट. मैं चलूंगी इसके एक और क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपने इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे अपनी क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है. दोनों टॉपिक्स कंपैरेटिव टॉपिक्स हैं, इन दोनों में आपने चीज़ें कंपेयर की हैं. पहला टॉपिक है आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड वीडियो गेम्स, दूसरा टॉपिक है टेक्स्ट मैसेजेस एंड पर्सनल कॉन्वर्सेशन. तो हम पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड वीडियो गेम्स को डील कर लेते हैं, उसके पॉइंट प्लान डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम टेक्स्ट मैसेजेस और पर्सनल कन्वर्सेशन के ऊपर जाएंगे. तो आउटडोर एक्टिविटीज क्या होती हैं? इफ वी स्पीक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, वी स्पीक अबाउट स्टेमिना बिल्डिंग, ठीक है, वी स्पीक अबाउट टीम वर्क, we speak about being strong, being bold, accepting defeat, accepting the wins of others, okay, accepting triumph, ठीक है, be humble, when you win. So these are all the benefits of outdoor activities. But what has happened? What has happened is nowadays people prefer to stay indoors. People prefer to go on or to play video games. Now what has happened is these video games have turned the people into introverts. ठीक है, indoor activities, video games. Since they do not go out, they do not interact, they don't go out, they don't interact with others, they have become introverts. Introverts क्या होते हैं? वो जो अपनी बात नहीं करते हैं, खामोश रहते हैं, शाय होते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं. और आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो आपको एक्सट्रोवर्ट बनाते हैं. एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं? एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स, अपनी आइडियाज दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं इजीली. सिंस यू आर सिटिंग इनडोर्स एंड यू आर प्लेइंग online games only with your own self, you become introvert, you become shy, you do not have any sense of teamwork. क्योंकि आप टीम गेम्स तो खेलते ही नहीं हो ना, आप ऐसा तो करते ही नहीं हो ना कि मैं बैटिंग करता हूं तुम बॉलिंग करो, ठीक है, इस तरह तो खेलते ही नहीं हो ना कि मैं वहां से पास दूंगा तुमने वहां से पास कैच करना है. कोई टीम वर्क नहीं होता. यू डोंट सोशलाइज, आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं करते हो, आपको सोशलाइज करना आता ही नहीं है, आपको लोगों से मिलना भी नहीं आता. इस तरह से यू बिकम शाय, यू बिकम इंट्रोवर्ट, ठीक है. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडोर एक्टिविटीज एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज. When you play outdoor activities, you play with mud, you play with soil, you sweat. When you sweat, you have more energy, you have enough energy. When you are playing indoor activities, you do not sweat, you do not work hard, and thus you become a couch potato. And when you become a couch potato, you start having multiple health problems. ठीक है, multiple
health problems. Unless and until you go out, you burn all the calories that you have intaken or that you have taken in, you are not going to become an active or essential members of the society. Alright, so this is how you are going to write about indoor activities and outdoor games, right? The next is text messaging to personal conversation. अब text messages to personal conversation में आप ये कहेंगे कि it has become far easier to communicate, to send a message through text. ठीक है, text has become the easiest and the fastest mode of communication. You can be anywhere and it's not going to take any time to send a message, and thus you do not waste any time, you do not lose your relations, you are not misunderstood, and thus you have ample time to communicate, to talk to each other, rather than personal conversation in which you are going to take a lot of time, in which you have to specifically arrange or organize, ठीक है, specially arrange or organize, plan or arrange some time to meet up and to do the explanation, or to meet up and to solve your misunderstandings. Alright? Alright, so these are the two essay writing topics that I have briefly discussed with you. I've given you a little bit of point plan in order to write these essays. I hope that you will do a little bit of research and write these essays in your creative writing notebooks. Both of the essays, because we do not want to lose any chance of losing any marks in the final exam. Quickly recapitulate today's lesson. We did the comprehension and we did the creative writing of review 2. Be healthy, be safe, take care of yourself and keep on studying. We'll meet each other in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.